Hello, my dear students. Don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning. And आपके इस learning excitement को burning रखने के लिए मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all for this session. इस सेशन में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे and we are going to work on three very interesting form of expression representations and those are infix, prefix as well as postfix. हम लोगों ने जो मैथमेटिक्स किया स्कूल डेज से लेके अब तक दैट वाज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू द इनफिक्स फॉर्म एंड अभी कंप्यूटिंग में देखने वाले हैं व्हाट आर प्रीफिक्स एज वेल एज पोस्टफिक्स फॉर्म्स। तो इस सेशन में इनके प्रॉपर्टीज, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कहाँ पे कौन सा फॉर्म सुटेबल है, क्या उसके ड्रॉबैक्स है, all those things we are going to work on, as well as one more thing, if the infix form is given to you, I'll be showing you how you can convert it into the corresponding prefix as well as postfix. So let's move into the detailings of this. So when we talked about expression notation, we know that there are two fundamental aspects of expression, and one is operator and the next one is operand. The operation to be performed is indicated by operator and the data to be operated on is known as what? Operand. For example, if I write 4 plus 5, here it's an operator and 4 plus 5, the data to be operated on is known as what? Operand. तो यहाँ पे जो हम लोग एक्सप्रेशन के फॉर्मेट्स देखने वाले हैं उनमें ऑपरेटर का जगह विल डिसाइड वेदर इट्स इनफिक्स और प्रीफिक्स और postfix forms, right? Okay, so इस हिसाब से we could be able to identify that there are three subtypes of this and those are infix, prefix and postfix. Specifically बात करने वाले हैं about in, pre as well as post. So ऑपरेटर का जगह अगर ऑपरेंड के बीच में है तो दैट इज व्हाट? इनफिक्स. अगर ऑपरेटर पहले आ रहा है ऑपरेंड से दैट इज प्रीफिक्स एंड ऑपरेंड के बाद में अगर ऑपरेटर है दैट इज व्हाट? पोस्टफिक्स. सो एक एग्जांपल से तुरंत क्लियर करते हैं हाउ इट लुक्स लाइक एंड यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ ऑपरेटर एंड यहाँ पे आई कुड बी एबल टू सी दिस एज व्हाट? इन बिटवीन द ऑपरेंड्स, प्रायर टू द ऑपरेंड्स एंड यहाँ पे पोस्ट में आएगा after the operands, right? So इस हिसाब से the expression can be represented as infix, prefix and postfix. You may be surprised because आपने prefix and postfix expressions mathematics में use नहीं किए होंगे, but definitely you will find n number of their applications in computer science and we know that we have massively used what? Infix operations, right? So let us see like what are their advantages and disadvantages and फिर हम लोग interconversion के बारे में बात करेंगे, right? So when I'm talking about infix operations, I could be able to find that infix notation is easy to read and understand for human and that's why entire mathematics we studied from childhood days is with respect to what? Infix notation, right? And the order of operation must be taken into account as well as the parenthesis can be used to override the default order of operation. What I mean by this, please try to understand. For example, अगर मैंने ऐसे लिखा है 4 plus 2 multiplied by 3, how we can evaluate this particular entity? So कुछ लोग कहेंगे 4 plus 2 that is 6, 6 multiplied by 3 that is what? 18. And the other one is 2 into 3 that is what? 6 plus 4 and the second answer comes as what? 10. अभी आप बताओ आपके हिसाब से which answer is perfect for this particular expression evaluation, right? आप कहोगे sir multiplication comes prior to addition as far as the precedences and Bottomless rule is considered, right? So in this case we could be able to see that जब हम लोग infix operations करते हैं so we must know the precedence rule, we must know the Bottomless rule so that we could be able to evaluate it in more proper way, right? And अगर आपको इनका order of precedence change करना है तो इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे? So 4 plus 2 multiplied by 3
and as we are keeping it in parenthesis, it is indicated that ये पहले होना चाहिए, फिर multiplication होगा, तो इस हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए what 18, right? So parentheses are very useful when we want to alter the operation का precedence, and in this case definitely the order is decided with the predefined rules as what BODMAS rules, right? Okay, so we know how this infix operation works. So let us see like what are its advantages, and definitely the biggest advantage is more natural and easy to read and understand from the human perspective, right? Okay, widely used and supported by most programming language representation. आप चाहे सी में प्रोग्रामिंग करो, सी प्लस प्लस में करो, जावा में करो, पाइथन में करो, आप जब एक्सप्रेशन एज अ प्रोग्रामर प्रोग्राम के अंदर लिखोगे तो आप हमेशा लिखोगे इनफिक्स नोटेशंस में, राइट? ओके, सो नाउ let us see like what are some of the disadvantages. One is requires the parenthesis to specify the order of operation. That is what we discussed just now, right? Okay, and next one is can be difficult to parse and evaluate efficiently. अगर आपको कंप्यूटर के थ्रू इनफिक्स ऑपरेशंस को इवैल्यूएट करना है तो आपको कंप्यूटर को सिखाना पड़ेगा व्हाट आर प्रेसिडेंसेस, व्हाट इज BODMAS रूल, एज वेल एज हाउ इट कैन ट्रीट द पैरेंथेसिस इफ वी वांट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, राइट? तो ये सारा का सारा कंप्यूटर को आपको सिखाना पड़ेगा, एंड देन ओनली कंप्यूटर कैन इवैल्यूएट व्हाट infix notations. So this is one of the drawback that can be difficult to parse as well as evaluate efficiently through what computers, right? Okay, so let's see now what is the next notation, and next notation comes as what prefix notation, also known as polished notation, and the operator is written first followed by its operands, that is prefix, right? Okay, parentheses are not used, so evaluation is more easy using stack based algorithm. So जब आप डेटा स्ट्रक्चर में आगे बढ़ोगे तो यू विल फाइंड अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नोन एज स्टैक. वहां पे स्टैक बेस्ड एल्गोरिदम से आप देखोगे प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशंस का इवैल्यूएशन एज वेल एज पार्सिंग विल बी मोर एंड मोर इजी, राइट? ओके, एंड नेक्स्ट टू दैट एडवांटेजेस के रूप में नो नीड ऑफ पैरेंथेसिस एज ऑपरेटर इज ऑलवेज precedes its operands, right? Okay, easier to parse and evaluate using what stack based algorithm, and more efficient as compared to infix when we are dealing with expressions that have large number of parentheses, right? Okay, and इसके disadvantages में obviously जब आप इसको read करोगे you won't find it more comfortable to read, so can be difficult to read and understand for human perspective and not as commonly used as infix notations. So हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम लोग प्रीफिक्स में एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे जब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, राइट? So we are always using what infix notations in programming, right? Next to that, postfix notations, also known as reverse of polished notations. So the operands are written first followed by what operator. Same kind of properties you will find. Parentheses are not required to alter the order of precedence and all. And advantages के रूप में obviously no need of parentheses, easier to parse and evaluate using stack based algorithm, and जब बहुत सारे parentheses है, larger expressions है, तो prefix as well as postfix is more suitable. And disadvantages के रूप में you will not find it comfortable to read, so can be difficult to read and understand for humans, and not as commonly used as infix notation, and can be less efficient as compared to what prefix in some of the cases, right? Okay, so ये हुए इनके advantages as well as disadvantages, right? And we have seen like what are infix, prefix and postfix. आपको याद कैसे रखना है? In operator is present in between the operands, pre वो पहले present है, post वो बाद में present है, right? Okay, now let's move into somewhat more detailings about how we can see their interconvergence, right? Okay, for example, अभी अपने सामने there are certain infix notations that are given, right? So let's see like how we can convert the given infix expressions into corresponding prefix as well as postfix. बहुत ही सिंपल रखने वाला हूं, आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो. So let's go on looking towards the first given expression a plus b multiplied by c plus d. तो यहाँ पे
बी इंटू सी बॉडमॉस रूल के हिसाब से, प्रेसिडेंसेस के हिसाब से ये पहले करना पड़ेगा, राइट? सो हाउ वी कैन राइट इट, प्लीज ऑब्जर्व. सो आई विल बी राइटिंग इट एज ए प्लस parenthesis में b multiplied by c and plus d, right? So b plus c, I'll be replacing it with the value as, let us say, x. So this becomes a plus x plus d, and यहाँ पे मेरा x वैल्यू होने वाला है b multiplied by c. अभी इसको प्रीफिक्स फॉर्म में कैसे लेना है, पैरेंथेसिस को पहले हटा देंगे एंड x becomes multiplication of bc, राइट? सो नाउ नेक्स्ट इज a plus x को मैं कंसिडर करने वाला हूं y. So my expression becomes y plus d. So what are the values of y that we have? Y is equal to a plus x, right? इसको prefix form में लाते हैं. So y is equal to plus a x, right? Now y plus d ये अभी भी infix form में है, इसको पहले prefix form में convert करते हैं. So this will give me plus y d. Now let's go on replacing y. So y is plus ax. So plus y का replacement plus ax and d as it is. And अभी d को replace करते हैं, sorry, अभी x को replace करते हैं, and that is plus plus a. s का replacement is multiplication of bc followed by what? d. And this is my prefix equivalent expression of the given infix one, right? Let's try to convert it into the corresponding postfix notations, right? तो इसको हम लोग लिखते हैं, let us say, so इसको हम लोग लिखते हैं, let us say a plus ब्रैकेट के अंदर b multiplied by c plus d. As usual यहाँ पे जो पहला ऑपरेशन करना है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा with some variable x, and x is equal to, let us say, b multiplied by c, right? Okay, इसको postfix में कैसे कन्वर्ट करना है, right? Parenthesis को निकाल देंगे, b c multiplication, right? Now how we can write this? So that will be a plus x plus d, and now what I'll do is a plus x को मैं कंसिडर कर रहा हूं y plus d. So my y will be a plus x. कैसे इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे? y is equal to ax plus, right? Okay, and this y plus d, it is still in the infix form, so इसको कन्वर्ट करते हैं पोस्टफिक्स में पहले. So y d and plus, let's go on replacing y value. So y value का रिप्लेसमेंट होगा ax plus d as it is plus, and फिर x वैल्यू को रिप्लेस करेंगे. So that is a, x का वैल्यू is bc multiplication plus d plus as it is, right? तो ये हुआ the given infix expression का corresponding equivalent postfix expression. Easy है, right? Now let's go on looking towards the next one. Next example given is what? a plus b multiplied by c plus d. Now parenthesis की वजह से a plus b पहले करना पड़ेगा, c plus d पहले करना पड़ेगा, and उसके बाद multiplication operations हो गए. तो हम लोग let us go on converting it into the corresponding प्रीफिक्स नोटेशंस. पहले तो मैं ऐसे लिख रहा हूं a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय c प्लस d. आई एम कंसिडरिंग दिस एज x एंड दिस एज y, राइट? तो सिंपल नोटेशंस कैसे करेंगे? x मल्टीप्लीकेशन बाय y, जहां पे मेरा x इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर a प्लस b. सो इसका प्रीफिक्स नोटेशन ब्रैकेट हटा देंगे प्लस ab. y इज ब्रैकेट के अंदर c प्लस डी, हाँ प्रीफिक्स नोटेशन, रिमूव द पैरेंथेसिस प्लस सी डी, ऑपरेटर को पहले ला दिया, राइट? ओके, नाउ x प्लस वाई, दिस इज स्टिल इन द इनफिक्स फॉर्म, तो इसको पहले प्रीफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ x एंड y. नाउ लेट्स गो ऑन रिप्लेसिंग द x वैल्यू, सो इट बिकम्स मल्टीप्लीकेशन प्लस ab. लेट्स रिप्लेस द y वैल्यू प्लस cd, राइट? And now this is my equivalent prefix expression of the given infix one, right? Okay, now let's go on converting it into the corresponding postfix notation. Simple रखते हैं. So यहाँ पे this will give me a plus b multiplied by bracket के अंदर c plus d, right? I'm considering this as x and this as y. So my expression becomes x multiplication by y, जहाँ पे x value है
ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, राइट, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, सो x वैल्यू इज, ब्रैकेट को हटा देंगे, a b एंड प्लस, राइट, y इज इक्वल टू इनटू पैरेंथेसिस c प्लस d, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, रिमूव द पैरेंथेसिस एंड पुट द ऑपरेटर आफ्टर द ऑपरेंड्स, so y is equal to cd plus, right? So this is still in the infix form, तो इसको postfix में convert करना है, तो कैसे लिखना है, x y and multiplication. Now let's go on replacing x value with this and y value with this. So x is my a b plus y is my c d plus and end में this multiplication as it is, right? तो ये हुआ इसका corresponding postfix as well as prefix, right? Okay, now what I'm going to do is I'm just going to keep this particular example onto you. तो इस हिसाब से जैसे मैंने ये दो एक्सप्रेशंस सॉल्व करके बताए, कन्वर्जन करके बताए, वैसे ही आपको इसका भी कन्वर्जन करके देखना है, राइट? ओके, so I hope कि conversion process is very clean and clear to every one of you. Now let us go on comparing infix, prefix and postfix according to their certain properties. So as far as the property readability is concerned, which is more readable? Yes, obviously infix notation is more readable and prefix as well as postfix notation less human readable, and we must be familiar to go on reading this. बहुत सारे अगर कन्वर्जन्स आप करोगे, बहुत बार अगर प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशंस के साथ अगर काम करोगे तो यू विल बी एबल टू रीड इट कंफर्टेबली, बट मोर कंफर्टेबल फॉर्म इज व्हाट, इनफिक्स, रीडेबिलिटी के हिसाब से, राइट? Operator placement, obviously, and that is the prime factor which is going to distinguish these three forms of expression in between the operands, before the operands and after the operands, right? Okay, parenthesis requirement, yes, definitely needed. हम लोगों को अगर प्रेसिडेंसेस को चेंज करना है तो पैरेंथेसिस इज द ओनली सॉल्यूशन. इन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स वी डोंट नीड इट, सो स्टैक बेस्ड एल्गोरिथम्स में ये प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म इवैल्यूएशन में बहुत काम आएंगे कंप्यूटिंग में, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ट्रैकिंग इज रिक्वायर्ड ओवर हियर, राइट? बट डेफिनेटली प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म्स में वो प्रेसिडेंसेस का ट्रैकिंग हमको नहीं चाहिए, राइट? ओके, नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन मेथड, लेफ्ट टू राइट है. प्रीफिक्स का जो नोटेशन है दैट इज राइट टू लेफ्ट, बट पोस्टफिक्स इज लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होगा, राइट? ओके, फॉलोड बाय दैट एम्बिग्यूटी हैंडलिंग. एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सीन, राइट? ओके, सो मे रिक्वायर एक्सप्लिसिट यूज ऑफ व्हाट, पैरेंथेसिस. कौन सा ऑपरेशन पहले करना है इसको इंडिकेट, इसके एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए parenthesis is more better options, right? Okay, so ambiguity is very rare because we are not using the parenthesis, as well as precedences are also taken care during the conversion process only, right? Okay, and next to that, computer efficiency will be more better with respect to prefix as well as postfix as compared to what, infix notations, right? Okay, and usage कॉमन इन एवरीडे अरिथमेटिक, हम लोगों ने सारा का सारा अरिथमेटिक अभी तक इनफिक्स के साथ किया है, बट प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स स्टैक बेस्ड एल्गोरिथम्स में बहुत सारे इसमें यूज होगा. मोस्ट ऑफ द कंपाइलर इंटरप्रेटर आर प्रेफरिंग टू यूज infix and prefix notations for their internal evaluations and all, right? Okay, so that's it for this session जहां पे हम लोगों ने कवर किए infix, prefix and postfix notations, their interconversion, their advantages and disadvantages, and end में summarize किया along with their various properties, right? So I hope you must have enjoyed these three forms of the expressions. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.